First we will draw a circle on the paper this way. पहले हम पेपर पे ऐसा गोल आकार बनाएंगे। Drawing a circle, we will cut the outer portion of the circle. गोल आकार बनाने के बाद बाहरी हिस्से को सीजर से काट दो। Now cut the paper following the line. अब लाइन को नजर रखते हुए पेपर को काटो। After it is cut, roll the paper slowly. पेपर के कटने के बाद उसे धीरे से गोल घुमाएं। At the end, stick the paper with glue. आखिर में पेपर को गम से चिपका दो। This way your paper rose will be ready. और इस तरह आपका पेपर वाला गुलाब तैयार हो जाएगा। You can also make rose stick this way. गुलाब की डंडी आप इस तरह से बना सकते हो।